Jay Baba friends, this morning we have the fortune to have Akash Dubey with us from Bangalore, India. He's going to sing some bhajans and maybe ghazal. Is it bhajans, would you say? Or mostly? Or Yeah, mostly bhajans or some ghazals or qawwalis as well. We'll try to. great. He may have a little technical difficulty, and if he does, we'll just wait while he manages. He was saying they had a bit of a problem this morning, but we're thank you so much, Akarsh, for coming. It's your evening, I know. Where you had a nice, but he says there's a good Baba group in Bangalore. They meet weekly, and yeah, he's part of that group. Thank you, Akarsh, for coming, and we're looking forward to music. Thank you. Say Well, Baba. Jai Meher Baba, thank you to everyone present over here, and thanks a lot to Meher Baba who gave me this opportunity to be able to sing in the session with you guys, and hopefully this was going to be a good soulful session because I don't really have a lot of percussion and stuff with me. I'm just a single person today singing, so we'll do those kind of bhajans. We'll try to do those kind of ghazals as well. So to start the session off with, I have a small prayer like song which is called Namo Meher Baba. So because I'm in Bangalore and this is like the southern part of India, so it's like what I've seen is that the southern part of India, whenever we have a gathering, the gathering always starts with the song which is Namo Meher Baba. And I think I'm not 100% sure, but I think I've heard that this has been going on since Meher Baba's time, and people used to sing this song in front of Meher Baba whenever the gathering used to begin. So to start off with, it's Namo Meher Baba, a small prayer. Avtar Meher Baba ki jai. Please let me know if I'm audible and my harmonium is audible. It's all good? Great. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा अपार दिव्या कृपा सागरा पार दिव्या कृपा सागरा सकल चराचर जगदोधार सकल चराचर जगदोधार नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा जोहारुलिव श्री मेहर बाबा जोहारुलिव श्री मेहर बाबा मही निज निंचन मानव रूपा मही निज निंचन मानव रूपा इह परानंद जीवन मीवा इह परानंद जीवन मीवा भव भय भंजन परम पावना भव भय भंजन परम पावना नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव
अज्ञानानत अंतमुचेसी दिव्य विज्ञान दृष्टिनो संगी दिव्य विज्ञान दृष्टिनो संगी हर्षड्वैगमुअन्तरिंपगा हर्षड्वैगमुअन्तरिंपगा अव्ययमोक्षमु अनुग्रहिंपुम् अव्ययमोक्षमु अनुग्रहिंपुम् नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा अपार दिव्या कृपा सागरा अपार दिव्या कृपा सागरा सकल चराचर जगदोधारा सकल चराचर जगदोधारा नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. So this is where I want all of you to join in. जय मेहर बाबा जय 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 अवतार मेहर बाबा की जय बाबा. So this was a short prayer like song. I'm not exactly aware of the meaning, pardon me, because this is in Telugu, which is not my mother tongue and not the language that I'm aware of, but this is a language quite prevalent in South India. So this was Namo Meher Baba. Next up we have a very what we call an important bhajan, which is Shyam Sundar. Shyam Sundar ki Sudh Jab Aayi, and if I remember correctly, this is a bhajan that was very close to Meher Baba. I think he used to. This is, I think, before the time when he observed his silence, and he used to sing this song. So this is Shyam Sundar ki Sudh Jab Aayi. I'll quickly explain the meaning because I have that handy. So I'll say the line. It says Shyam Sundar ki Sudh Jab Aayi, सरसों फूली आँखों में कुछ ना कुछ है देत दिखाई, सरसों फूली आँखों में. And the meaning is, then appeared the dark and the beautiful Shyam Sundar. Shyam as in Lord Krishna. Then appeared the dark and the beautiful Shyam Sundar. The yellow mustard blossomed. Everything had a new meaning. The yellow mustard blossomed. To explain the further few stanzas a little, the next stanza says that in every drop the ocean was revealed, in every particle the sun. Such were the master's marvel, the yellow mustard blossomed. In a human form the master appeared, the prisoners saw their freedom, the unheard was heard from the lips, the yellow mustard blossomed. And one more stanza, it says, listen to what befall Niyaz. I think Niyaz was the poet. Yeah, Hazrat Shah Niyaz was the poet. So he writes,
Listen to what befall Niyaz. Gone was his mind and senses. He lost himself and found the one, the yellow mustard blossomed. So this is Shyam Sundar ki Sudh Jab Ai, Sarso Phuli Aankhon Mein. And I'll just take a moment to configure my speaker. Just a moment. Um, Akarsh, the harmonium was just a little bit loud. It's okay, but if it could be just a bit softer, it might be. Or your Definitely, I'll do something about it. Yeah, just give me a moment. So my speaker got disconnected, which had the Tanpura playing, and I'm just taking a moment to set that up. अवतार मेहर बाबा की जय। श्याम सुंदर की सुध जब आई, सरसों फूले आँखों में, कुछ का कुछ है देत दिखाई, सरसों फूले आँखों में। श्याम सुंदर की सुध जब आई, श्याम सुंदर की सुध जब आई, सरसों फूली आँखों में। श्याम सुंदर की सुध जब आई, सरसों फूली आँखों में, कुछ का कुछ है देत दिखाई, कुछ का कुछ है देत दिखाई, सरसों फूली आँखों में। हर हर बूंद समंद पहचानो, हर जर्रा खुर्शीद, हर हर बूंद समंद पहचानो, हर जर्रा खुर्शीद। वाह रे गुरुजी खूब सजाई, वाह रे गुरुजी खूब सजाई, सरसों फूली आँखों में। श्याम सुंदर की सुध जब आई, सरसों फूली आँखों में।
बंदे को मौला दिखानो, कैदी को बेकैद। बंदे को मौला दिखानो, कैदी को बेकैद। अनकहनी मुख सुन कहलाई, अनकहनी मुख सुन कहलाई। सरसों फूली आँखों में, श्याम सुंदर की सुध जब आई। सरसों फूली आँखों में। नियाज कहानी सुनो रे भाई, होश गए बेहोशी आई। नियाज कहानी सुनो रे भाई, होश गए बेहोशी आई। खुदी गई तब मिली खुदाई, खुदी गई तब मिली खुदाई। सरसों फूली आँखों में, श्याम सुंदर की सुध जब आई। सरसों फूली आँखों में। And the last stanza of this beautiful song, it says, when Manmohan revealed himself. Again, Manmohan is referencing back to Shyam, Lord Krishna. When Manmohan revealed himself, the yellow mustard blossom, and the pallor of love flushed the face, and the yellow mustard blossom. मनमोहन जब छब दिखाई, सरसों फूली आँखों में। मनमोहन जब छब दिखाई, सरसों फूली आँखों में। प्रेम की जर्दी मुख पर छाई, प्रेम की जर्दी मुख पर छाई। सरसों फूली आँखों में, श्याम सुंदर की सुध जब आई। सरसों फूली आँखों में, कुछ का कुछ है देत दिखाई। सरसों फूली आँखों में, श्याम सुंदर की सुध जब आई। सरसों फूली आँखों में। अवतार मेहर बाबा की जय। So this was Shyam Sundar ki Sudh Jab Aayi,
and I've heard that it was one of Baba's favorite songs. So, so definitely we had to do it. The next song in line is let me see. So I love doing Madhusudan ji's bhajans. Madhusudan Pund was a great poet, singer, composer in Baba's time. I think everyone would be aware. And he used to write beautiful songs. I really love his compositions. So we'll quickly do one of his bhajans, which is, let me find the lyrics so that I am sure I'm doing that. Yeah, so it's जब चिंता से घिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, and जब कुछ भी समझ ना पाओ तो कहना मेहर बाबा, which essentially says that when you are surrounded by anxiety, you are very sad, and your mental peace is gone, and when you're not able to understand anything, just remember one thing: take my name. So it says कहना मेहर बाबा, and the bhajan continues along the same lines. It says जब मुश्किल में फंस जाओ, when you're stuck somewhere in a difficult situation, जब कोई राह ना पाओ, when you're not able to find any way out, and जब कुछ भी सह ना पाओ, when you're not able to bear anything, just say मेहर बाबा's name. ज़रा मेहर कह के देखो, try saying Baba's name. ज़रा दिल में अपने झांको, try looking inside your heart. वही काशी वही है काबा. He is the god of the Hindus. He is the god of the Muslims. प्यारे कहना मेहर बाबा. Just say his name out loud. ये दुनिया एक उलझन है, यहाँ माया की अनबन है. This whole world is, it's all illusion. It's all Maya. And जो चाहो प्रेम की आभा. If you want love in your life, just say मेहर बाबा. जो जपे मेहर को हर पल, the person who takes Baba's name every moment, वो पाए शांति का फल. He receives like what is Shanti? Peace as the blessings. Madhusudan ujle pratibha, gata ja meher Baba. So just keep singing Baba's name. That's the song. जब चिंता से घिर जाओ. अवतार मेहर बाबा की जय. जब चिंता से घिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब चिंता से घिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ तो कहना मेहर बाबा. जब कुछ भी समझ न पाओ तो कहना मेहर बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा. जब मुश्किल में फंस जाओ, जब मुश्किल में फंस जाओ, जब कोई राह न पाओ, जब कोई राह न पाओ, जब कुछ भी सह ना पाओ तो कहना मेहर बाबा. जब कुछ भी सह ना पाओ तो कहना मेहर बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा. जरा मेहर कह कर देखो, जरा मेहर कह कर देखो, जरा दिल में अपने झांको, जरा दिल में अपने झांको. वही काशी वही है काबा, प्यार कहना मेहर बाबा. वही काशी वही है काबा, प्यार कहना मेहर बाबा. जय बाबा जय बाबा
माया की अनबन है, जहाँ माया की अनबन है। जो चाहो प्रेम किया भा, प्यार कहना मेहर बाबा। जो चाहो प्रेम किया भा, प्यार कहना मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जो जपे मेहर को हर पल, जो जपे मेहर को हर पल, वो पाए शांति का फल, वो पाए शांति का फल। मधुसूदन उजले प्रतिभा, गाता जा मेहर बाबा। मधुसूदन उजले प्रतिभा, गाता जा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। 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 जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। That was जब चिंता से घिर जाओ. And moving forward, let me see what suits the mood right now. Um, okay, let's do this one. This one is a very beautiful one, and I'm not sure if everyone will be knowing, but this is a very famous one in the Baba world, and this is called लिखन पढ़न से नयार बाजी, सनम का हरदम ख्याल होना. And this is a very beautiful song. It has been written himself by Baba, like Baba himself wrote it under the pen name of sorry, what was the pen name of Baba? Oh Was my it God, was it it's not. Huma? Not Sorry. Huma? Not Huma. Poetry he Huma, wrote. yeah, Huma, Yeah. yeah. I kind of blanked out for a moment. I'm like, I was like, how can I forget this detail? But yeah, so this is Likhan Padhan, and why this is so famous in the Baba world is because every year during the Amar Tithi, Rustam and Sorab Irani they sing it right before the silence, and it's Likhan Padhan se Nayar Bazi Sanam ka Hardam Khayal Hona. Because I have the meaning handy, I'll just let you know. So the meaning is reading and writing do not take you to the beloved. Constant remembrance is the only way to him. Um, so we have meanings of individual words. Let me read it out so that I can explain it to you. So the line says, Firak may be Visal hona, Jawab may be Sawal hona. Firak means waiting, and Visal means death. So Firak may be Visal hona is, it means that uh, like while waiting, uh, like while waiting we wait so long, we long so much for that person or our beloved, that it brings death to us. And essentially it means to spend a long time waiting for God. Then do I have other meanings as well? Let me see. um,
Okay, so another stanza of this it explains that someone is ruined by desires while someone always insists on the right path and lawfulness. That's one stanza. Then the last one where Baba has like written the name Huma. So the line explains that the bird Huma, the phoenix, is regenerated from its ashes and tells Meher, I want nothing but the presence of your majesty, the brilliance. So this is लिखन पढ़न से नयार बाजी सनम का हरदम ख्याल होना अवतार मेहर बाबा की जय लिखन पढ़न से नयार बाजी 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 सनम का हरदम ख्याल होना सनम का हरदम ख्याल होना फिराक में भी विसाल होना फिराक में भी विसाल होना जवाब में भी सवाल होना जवाब में भी सवाल होना लेखन पढ़न से नयार बाजी सनम का हरदम ख्याल होना किसी को इज्जत किसी को दिल पर किसी को कारुण कमाल होना किसी को इज्जत किसी को दिल पर किसी को कारुण कमाल होना किसी को हशमत किसी को अजमत किसी को हशमत किसी को अजमत किसी को हुस्नो जमाल होना किसी को हुस्नो जमाल होना लिखन पढ़न से नयार बाजी सनम का हरदम ख्याल होना किसी को बातिन खुदा शनासी किसी को जाहिर कमाल होना किसी को बातिन खुदा शनासी किसी को जाहिर कमाल होना किसी को ख्वाहिश हराम की है किसी को ख्वाहिश हराम की है किसी को सब कुछ हलाल होना किसी को सब कुछ हलाल होना लेखन पढ़न से नयार बाजी लेखन पढ़न से नयार बाजी सनम का हरदम ख्याल होना किसी को जंगल की आरज़ू है किसी को फैशन की चाल होना So this one is a very funny शेर and it says किसी को जंगल की आरज़ू है someone wants to live in the wild and किसी को फैशन की चाल होना someone just is into fashion they always want new clothes and something so the next line says किसी को बिरयानी मुर्गी कुरमा किसी को दाल भाजी या दाल होना which says that किसी को someone likes biryani and someone likes just dal and rice so किसी को जंगल की आरज़ू है किसी को फैशन की चाल होना किसी को बिरयानी मुर्गी कुरमा किसी को बिरयानी मुर्गी कुरमा किसी को भाजी या दाल होना किसी को भाजी या दाल होना लेखन
पढ़न से नयार बाजी, लिखन पढ़न से नयार बाजी, सनम का हरदम ख्याल होना, सनम का हरदम ख्याल होना. So this is the last शेर. किसी को यज़दां के दर की मिट्टी, किसी को याकुतो लाल होना, किसी को यज़दां के दर की मिट्टी, किसी को याकुतो लाल होना. मेहर को कहता है खाकी हूँ माँ, मेहर को कहता है खाकी हूँ माँ, हमें तो रब्बुल जलाल होना, हमें तो रब्बुल जलाल होना. लिखन पढ़न से नयार बाजी, लिखन पढ़न से नयार बाजी, सनम का हरदम ख्याल होना, सनम का हरदम ख्याल होना. फिराक में भी विसाल होना, फिराक में भी विसाल होना, जवाब में भी सवाल होना, जवाब में भी सवाल होना. लिखन पढ़न से नयार बाजी, सनम का हरदम ख्याल होना, सनम का हरदम ख्याल होना, सनम का हरदम ख्याल होना. अवतार मेहर बाबा की जय. So that was Likhan Padhan, written by Baba himself, and it has a lot of like Baba's humor in it, and that's why it's such a fun song to sing. So moving on, I'll because I wanted to do this one. It's more of a this Qawwali has like a big past in the sense that this Qawwali, I don't exactly remember its origin, but it has been sung since it like people have been singing it since a very long time. This is a Sufi Qawwali, and it is called Saason ki Mala pe Simru Main Pee ka Naam. It essentially means that like if you've seen people, they kind of meditate while moving the beads of a garland, right? I'm not sure if you're aware of that's a very common thing over here in India. So people use a garland which is made of beads, and they move one bead and then take the beloved's name, then one bead and take the beloved's name. So the Qawwali says that Saason ki Mala, a garland made of like breath, like each breath is the bead, and with each breath I take beloved's name. So it says Saason ki Mala pe Simru mein is taking taking the name, Simru mein Pee ka Naam, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की just a moment, let me actually open the lyrics so that I'm sure I'm not messing it up. अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम. So it says अपने मन की मैं जानूं, which is that which means that what's going inside me, I'm aware of it, and what's going inside God's head or whatever he has planned, only he is aware. So अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम भगवान God, Ram, Lord Ram. So that's Saason ki Mala pe Simru mein Pee ka Naam. And let me give you a brief of the stanzas as well, because the stanzas are so beautiful. And so let me just read it out. So the first stanza is प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, which means that I was so drowned in the colors of love for my beloved, that essentially there remained no difference between me and my beloved.
It became just oneself. And प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, while just taking his name, while moving the beads up and down on the garland, I myself became Lord Sham. So that's one of the stanzas. And let me see another one. प्रीतम का कुछ दोष नहीं है. So another stanza is प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष, which means that the beloved is not supposed to be blamed. He's what we call he can't be blamed. Let me put it like that. So he can't be blamed. वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, which means that I keep talking to myself, because I keep taking his name, right? So it's essentially me talking to myself, and that is how I people started like the worldly people started judging me that this is a person who's just simply lost and has nothing to do with the world, because I'm so lost in the thoughts of my beloved. So this is सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम. Let me sing it now. अवतार मेहर बाबा की जान. सारे गा रे रे नी दा सा पा मध पा मग रे ग मद नी दा पा पद सा नी सा नी सा दा मद पा मग रे ग सा रे नी दा रे सा. पिया इन नैनन में पिया 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 इन नैनन में जो पलक ढाप तो हिलूं ना मैं देखूं गैर को और न तो है देखन दूं काजर डारू किरकरा सुरमा दिया न जाए जिन नैनन में पिया बसे भला दूजा कौन समाए. So this couplet that I just sang, it says that आ पिया in नैनन में, like beloved please come and reside in my eyes so that I can simply see you. And in नैनन में जब पिया बसे तो भला दूजा कौन समाए. If the Lord himself is sitting in my eyes, I can only see like him. How can there be someone else? And it's just the beloved whom I am looking at and will always be looking at. सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम. सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम. अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम. अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम. सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम. पी का नाम. सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम. यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा है. सांसों की माला पे
रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, प्रीतम की नजरों से गिर के जीना है किस काम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अवतार मेहर बाबा की जय। That was सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम. A very soulful qawwali, and I think the world knows it by like there was a person, a singer from Pakistan, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, and I think he was one of the main persons to really bring this qawwali to the whole world, and people, a lot of people came to know about this qawwali through him. So a lot of thanks to him for that. Following this qawwali, I think I should move on to one of the bhajans. Or let me take this small piece and then I'll go to the bhajan. Another qawwali which is very close to my heart, just because at a very young age, when I was, I think, around 14 or 15, I got to know that this qawwali has a great significance in the Baba world, and
the story goes like this, that this Qawwali was sung in front of Baba somewhere in 1960s, maybe 1964. And there is a specific line when when that line came, when the singer sang that line, Baba clapped and stopped him and said that this line, it means my manifestation. So that Qawwali is called Tajdar Haram. I'll just take a small snippet. I won't sing the complete thing. Uh, yeah, just a moment. Okay. So the Qawwali is called Tajdar Haram, Ho Nigahe Karam, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, which means that, oh beloved, your please shower your grace on us, and our lives, we poor people, our lives will be blessed, and eventually we'll be able to reach to you. अवतार मेहर बाबा की जय। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, मैं कशों आओ मदीने चले, मैं कशों आओ मदीने चले, दस्ते साकी कौसर से पीने चले। So this was the stanza where Baba stopped the Qawwal, like the next line, but I'll quickly explain this stanza what it means. It says, मैं कशों आओ आओ मदीने चले. मैं कशों is, he's inviting everyone, the people who would be interested in drinking. He's asking everyone कि come let's go together to Medina, Mecca Medina, which is like the place of worship of Muslims. So he says that let's go to Medina for drinking. What are we drinking? दस्ते साकी एक औसर से पीने चले. The wine, or like the alcohol that the Lord is pouring, let's go and drink that. So he says, मैं कशों आओ आओ मदीने चले, दस्ते साकी एक औसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, ये जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम. So the second line where Baba actually stopped him, the line says, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, which says that just remember it to yourself that if he shows his nazar,
if there is his nazar on you, like he showers his blessings on you, ये जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे. The empty vessels, us, like all of us who are the empty vessels, will be filled with his divine wine, and eventually we'll be one with him. So this is what Baba called his manifestation. ताजदार हरम हो निगाहें करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे. अवतार मेहर बाबा की जय. So I think we already reached like the 9 p.m. IST mark, and I didn't even realize it's already 1 hour. Oh my god. Uh, well, I think I had a great time. I think we should stop over here. I won't take much of your time. Oh, this has been wonderful, Akash. Wow. Wow. Yeah, you're right. Time flew away. Uh, Yeah, yeah, we, yeah. I think if there's time, we can quickly do an arti, if that's fine. yes, please. Yeah. Sure. Let's do Bujhave then. Mm. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलत नीय कर कुद रत्न फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमातु अया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए से खुदा ना जात के फथई में धो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरियाए वहदत मारिफत हमोर है रब ने साले बकश ज्ञान ईज़द के तू पर नीचने मुख तारे रफातू खुदा ना प्रेम नो प्यालो पिलावे मस्त हमने जाने सदके राखिया दीन पयमानो हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनिए बाबू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनिए बाबू बुझावे नार जहलत नीय कर खुद रत्न फरमातू छेलागी आस भक्तों ने के बख्शे नूर ईमातू. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Thank you, Baba. Well, I think there's a lot of noise in my background. Just let me do this. That was wonderful. Thank you so much, Akash. That was a perfect ending. Lovely, lovely. And I know it's late for you. Well, thank you. Thanks a lot. Thanks a lot for having me over here. It's great singing Yeah. uh, among all of you, and
It's always a great experience every time that I come with different set of people, and it's always a new experience for me as well. So, well, thanks to Baba for giving me this opportunity, and hope to see you guys soon. That's It's right. been very enjoyable. Just so lovely to hear the music and to hear you singing. Thank you. Yeah. Thank you, Dad. Thank you, Jai Baba. See you again. Wait. Thank you. Be careful not to use you up. Right. Oh, yeah. No, No, I disagree. I disagree. Use them up. Yeah. no, that way at least I'll also get to learn new songs to come over here with every time with new songs, and yeah, I'll try to do this as often as possible. Great. Wonderful. Yeah, Wonderful. loved your whole show, but I'd love more koalis too. I think everybody would. Yeah. Perfect. Next time I'll definitely prepare more kavalis. I have actually a lot of them in the bank, but I thought to keep the set balanced out and to make sure everyone people who love ghazals, people who love kavalis, people who love bhajans, everyone have their time, and yeah, that's what I tried. But next time I'll keep that in mind. I'll make sure there are more kavalis. Thanks. Okay. Sweet dreams. Yes. We're going to say Avatar Meher Baba Ki. Baba ki jai. Avatar Meher Baba. Baba ki jai. Avatar. Dar meher Baba ki jai. Okay. Thank you. Thank you. All Thank right. you, Now, Meher Baba. Like your beard too. what's that? Oh, That uh, was fun. Thanks a lot, Betty, for absolutely. Yeah, that was bringing,